I have everybody on stage with me. Sadia, Amir, Hamza, Shazia, Nazia, Seher, Talha. I think I've got everybody. Now, like I said, today the topic is today what I'm going to teach you is about articulators. What is an articulator? This is what we'll be discussing and why they're important to learn. Now, you see a big mouth on your screen right now, I understand. So, this is a mouth. It doesn't have lips, but this is our mouth, right? Yep, that's right. This is your mouth. Now, why do we need to learn this? Why do we need to learn about articulators? We need to learn about articulators because let me tell you first of all. Let me tell you what where this word comes from. Articulate. Articulate in English pronunciation. It means to pronounce. In English learning, right? It means to pronounce. Pronounce means to make sounds. Articulate means to make sounds in English, right? In terms of pronunciation, that's what I mean. So articulate means to make sounds. Articulator is the tool or organ that we use to create sounds. Understand? The things that you use, the organs that you use to create sounds are called articulators. Now, why do we need to learn about them? We need to learn about them because you want to improve your pronunciation, right? How do you when you speak, what do you do? When you speak, you create sounds. What am I doing right now? I'm speaking English, right? I'm creating sounds. What is coming out of my mouth? Do you see my words? You don't see my words. You can't see anyone's words when somebody's talking. All you hear sounds. So the words, everything that I'm saying right now is actually sounds. How am I creating these sounds? I'm creating these sounds by using different articulators. I'm using my lips for some sounds, I'm using my teeth, I'm using my tongue, and there are some other articulators inside your mouth that you use to create different sounds. Now, why is it important? Like I said before, it is important because when you speak English, when you speak Urdu, when you speak Persian, Arabic, any language that you speak, you create sounds by using different organs inside your inside your mouth. You use your lips, you use your teeth, like I said before, different things, right? Now you need to learn the names. What is everything called? Different articulators, what they're called, and what articulators do we use when we speak English? Now, in English, there are 44 sounds. Everybody knows that. So all of the words, everything that you say, every sentence, every word, no matter what you say, they are, a combination, one or two or more sounds, 44 sounds only. So they are just 44 sounds. Now you need to learn if you want to be, you want your pronunciation to be good. If you want to improve your accent, you want to reduce your accent, you want to sound more like a native speaker. So you need to learn the way native speakers of English create sounds. Now, the way they create sounds, you need to learn that. Once you learn that, it's going to be easy for you to sound more like a native speaker, to pronounce different words correctly, improve your pronunciation. Now, this is what we'll be doing today. All right? This is what we'll be doing today. So, uh, I'm right now, I'm sharing my screen and you see a mouth. Now, like I said, sometimes when you create sounds using your lips, different sounds, right? Sometimes you use your lips, sometimes you use your uh, teeth, and sometimes you use your tongue. And there are other organs and other things inside your mouth that you use to create different sounds. Now, I will teach you all of the sounds, but not today because it's just not possible to learn all of the sounds in just one day. I will teach you sounds, all of the sounds that exist in the English language,
But before I teach you those sounds, it's really important for me to teach you and for you to learn different articulators, different tools, different organs that you use to create different sounds. Because you can't see me, I can't see you, and there are a lot of things that you can see in one's mouth when somebody's speaking. So let's begin. There are two kinds of articulators. There are two kinds of articulators: passive articulators and active articulators. All right? Passive articulators and active. Now, active articulators, the articulators, the organ that moves. For example, lips are active articulators. You can move your lips to create sounds. So, your lips are articulators, active articulators. Your tongue is also an articulator because you use your tongue to create different sounds. So your tongue is also an articulator. What kind of articulator? It is an active articulator. Look at your tongue. You see, look at this tongue. See, really long tongue. So yeah, you use your tongue to create different sounds, and you can move your tongue. So this is also an active articulator. All right, this is an active articulator. Now you can't move your teeth, right? So your teeth is not, we don't consider your teeth active articulators. They are passive. Your teeth are passive articulators. You need them to create different sounds. And then there are different, you see inside, look inside. Look at this. You see? So there are more articulator inside. See, this is called the hard palate. So there are some, what I'm just trying to tell you, जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखें, आप थोड़ी सी उर्दू भी इस्तेमाल कर लूँ वरना परेशानी होगी आप लोगों को, चूंकि बिगिनर लेवल क्लास है. देखें, जब भी आप कोई अल्फाज अदा करते हैं, कोई भी लफ्ज़ बोलते हैं, इंग्लिश बोलें चाहे उर्दू बोलें, दुनिया की कोई भी ज़बान बोलें, तो अपना मुंह इस्तेमाल करते हैं. ठीक है ना भाई? और मुंह के अंदर इंसान कुछ आवाज़ों के लिए होठों का इस्तेमाल करता है, कुछ के लिए ज़बान का इस्तेमाल करता है, कुछ के लिए दांतों का इस्तेमाल करता है. और फिर देखें, ये ऊपर आपको नजर आ रहा है, ये हार्ड पैलेट है ऊपर, जिसको हम तालू बोलते हैं उर्दू में. तो इसका भी हम इस्तेमाल करते हैं, जबान को इधर लगाते हैं मुख्तलिफ जगहों पे टू क्रिएट डिफरेंट साउंड्स, राइट? तो मुख्तलिफ आवाज़ों के लिए आपको अगर किसी के मुंह से जबान निकाल दें और होंठ निकाल दें उसके मुंह से, तो बेचारा वो कुछ नहीं बोल सकता. आपने देखा होगा कुछ लोग, दे आर म्यूट, दे कैन स्पीक. कुछ लोग नहीं बोल सकते, गूंगे होते हैं, उनकी जबान नहीं काम कर रही होती है सही तरीके से. तो कहने का मतलब ये है कि हमारे लिए सीखना ज़रूरी क्यों है? इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर अस टू लर्न. क्यों है ज़रूरी? क्योंकि देखें, अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो अदायगी है वो सही हो, तो ज़ाहिर सी बात है, जब सही आवाज़ निकालेंगे तो अदायगी सही होगी ना. सही आवाज़ निकालेंगे तो अदायगी सही होगी. आप चाहते हैं कि जी आप जब इंग्लिश बोलें तो आपका एक्सेंट बहुत अच्छा हो, लहजा बहुत अच्छा हो, तो लहजा अच्छा करने के लिए तो आपको उस तरीके से आवाज़ निकालनी पड़ेगी जिस तरीके से अंग्रेज़ निकालते हैं. ठीक है? आपकी प्रोनंसिएशन, आप जब आप बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो आपकी अदायगी सही हो ताकि लोगों को समझ में आए कि आप बोल क्या रहे हैं. ठीक है? तो इसके लिए जितने भी अल्फाज हैं इंग्लिश के, 44 साउंड्स होते हैं. इंग्लिश जो ज़बान है, इंग्लिश के अंदर जितने भी अल्फाज बनाए जाते हैं वो 44 साउंड्स के ज़रिए बनाए जाते हैं. उन्हीं में से आवाज़ों को आगे पीछे करके हम मुख्तलिफ अल्फाज बनाते हैं. So everything that you say, I say in English, so they are made out of those 44 sounds. Is that clear? अब हमें मैंने आपसे कहा जैसे कुछ आर्टिकुलेटर, हर जो जैसे दांत हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं, ज़बान है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं, होंठ हैं जिनको हम मुख्तलिफ आवाज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं, ऊपर की जगह आपको ये जो तालू है आपका ऊपर का जबड़ा, जिसमें जहाँ पे इसको आप तालू बोलते हैं, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं हार्ड पैलेट. ठीक है? इसको आप इस्तेमाल करते हैं मुख्तलिफ आवाज़ों के लिए, ज़बान को ऊपर लगाते हैं. तो मुख्तलिफ, इन सब को हम कहते हैं आर्टिकुलेटर. आर्टिकुलेटर का मतलब क्या? वो चीज़ें जिनका आप इस्तेमाल करते हैं मुख्तलिफ आवाज़ें निकालने के लिए, इनको इंग्लिश में बोलते हैं आर्टिकुलेटर, राइट? अब उनमें से कुछ एक्टिव हैं, एक्टिव आर्टिकुलेटर हैं, कुछ हैं पैसिव. एक्टिव किसको कहते हैं? जो कि मूव करते हैं, जैसे ज़बान आपकी आगे पीछे मूव करती है ना, ऊपर नीचे आप इसको इस्तेमाल करते हैं, ये मूव कर सकती है, इसको हम कहते हैं एक्टिव आर्टिकुलेटर. और लिप्स हैं आपके, होंठ हैं, उनको भी हम कहते हैं एक्टिव आर्टिकुलेटर. लेकिन जो दांत हैं, ये आगे पीछे हिल नहीं सकते.
बुड्ढे हो जाएं तो हिल जाते हैं लेकिन वैसे ये हिलते नहीं है, ठीक है। और आपका जो हार्ड पैलेट है, ये तालू है देखें, और ये जिसे कौवा बोलते हैं, ये ऊपर की जगह नरम सी मुंह के अंदर, इसको भी इसको भी इस्तेमाल करते हैं मुख्तलिफ आवाज़ों के लिए। अच्छा जी, सो खैर मेरे ख्याल में ये बात क्लियर होगी सबको। अगर किसी को यहाँ पे सवाल है तो मुझसे कर सकते हैं। अहमद, शाजिया, सहर, नाजिया, एनीबडी हैज एनी क्वेश्चंस? अभी मैंने सिर्फ बताया है आपको ये कि these are the articulators, some of the articulators that we use. अभी थोड़ी देर में मैं आपको बताऊंगा कि इनके नाम क्या हैं, ठीक है? Okay, sir, I have a suggestion. Yes, Ahmed. Sir, actually, in human mouth, there is an vocal cord which produce sounds of Mm-hmm. different. Mm-hmm. Uh, Mm-hmm. so if you No, go, we're not going to discuss vocal cords. yes, I'll tell you. Since right now we're not discussing vocal cords are actually chords, right? We're not discussing about chords because they create specific sounds. So we're not discussing those specific sounds right now. All right. So, but okay, we'll sir, do I that get, I got it. when we learn vowels and consonants. We'll cover them at that time. Right now, we're talking about articulators that you see here to create different consonant sounds. All right. Now, Yes. ऑलराइट, सो जैसा कि आपको नजर आ रहा है इस वक्त जबान है, ठीक है, दांत हैं, होंठ इसमें नजर नहीं आ रहा है आपको, लेकिन आपको मालूम है कि हम उनको इस्तेमाल करते हैं। सो दीज आर आर्टिकुलेटर्स, ये हम यूज करते हैं डिफरेंट साउंड्स को निकालने के लिए। अब मैं आपको देखें, जब मैं आपको मुख्तलिफ साउंड सिखाऊंगा, आगे चल के मैं आपको सिखाऊंगा मुख्तलिफ आवाज़ें निकालना किस तरीके से, तो जाहिर सी बात है मेरे लिए ये मुश्किल है कि मैं किसी के मुंह के अंदर जाके तो नहीं बता सकता उसको। तो हम क्या करेंगे, हम हर एक चीज का नाम रखेंगे। अभी मैं आपको सब चीजों का नाम बताऊंगा, ठीक है, कौन सा हिस्सा कहाँ पे लगाना है, उस हिस्से को क्या बोलते हैं। तो जब आपको नाम मालूम होंगे, when you know the names what they're called, it will be easy for you to produce those sounds. मैं बस आपको ये बोलूंगा, भाई आप जबान का ये हिस्सा आप इसको फलानी जगह पे लगाएं और ये आवाज इस तरह अदा होगी, तो आपको पता चल जाएगा। इस तरीके से मैं आपको प्रोनाउंसिएशन आपकी इंप्रूव करवाऊंगा, ठीक है। तो अब मैं आपको कुछ बताने लगा हूँ आर्टिकुलेटर्स के नाम, राइट। So let's talk about first of all lips. You already know upper lip, lower lip, upper lip, lower lip. Both of these are articulators, active articulators, right? Upper lip, lower lip. And then you have teeth, upper teeth, lower teeth. Upper teeth, these are your articulators. Lower teeth are not used for articulation. Upper teeth are your articulators. Upper teeth, lower teeth, front teeth. You can see your front teeth. ये देखें दो, ये सामने के दांत हैं दो. See, look at them. The front teeth and then lower teeth, right? Lips हो गए, ऊपर के दांत हो गए, नीचे के दांत हो गए. ये तो साफ जाहिर है, इसको तो आपको आसानी से. अब I'm going to tell you the parts of the tongue. Let's talk about the parts of the tongue. जबान के हिस्सों की बात करें, क्योंकि हम मुख्तलिफ आवाज़ों के लिए what do? We use different parts of the tongue. So this tongue that you see has different parts. इसको हम मुख्तलिफ हिस्सों में हमने तकसीम किया हुआ है, ठीक है। चूंकि जब हम प्रोनाउंसिएशन सिखाते हैं तो हम यही करते हैं कि जबान को मुख्तलिफ उसके हिस्सों में हमने बनाए हुए। सबसे पहले टिप, look at the tip of the tongue. This is the tip of the tongue. Let me show you. This that you see, that is the tip. नोक जिसे हम कहते हैं, उर्दू में मैं नहीं बताऊंगा, इंग्लिश में ही रखूंगा. The tip of the tongue. This is the tip of anything. Like this is the tip of your tongue. This part. See, this part is the tip of your tongue. Right? Look at this. This is the tip. This is the tip of the tongue. All right. Now, this is the tip, and after the tip, this part is called the blade. ये जो पार्ट आपको टिप, ये बिल्कुल टिप हो गई, नोक जो है बिल्कुल नोक आपकी जबान की है, ठीक है। इसको देखें, ये आपकी जबान की है टिप, टिप ऑफ द टंग बोलते हैं। उसके बाद जो पिछला हिस्सा है इसके बिल्कुल साथ थोड़ा सा जो हिस्सा नजर आ रहा है जबान का, दिस इज कॉल्ड द ब्लेड. व्हाट डू वी कॉल इट? दिस इज कॉल्ड द ब्लेड. इसको हम बोलते हैं ब्लेड. अब आप कहेंगे वाला ब्लेड लग रहा है, ये ब्लेड वो वाला ब्लेड नहीं, बस इसका नाम हमने ऐसा रखा हुआ है, ब्लेड ऑफ द टंग. ये कुछ आवाजों के लिए, जैसे कि या आप बोलते हैं छ, 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 आप बोलें छ, बोल के देखें छ. तो आप जो हिस्सा लगा रहे हैं अभी ऊपर, उसको बोलते हैं ब्लेड. बोलें छ, छ, छ.
कौन सा ऐसा लग रहा है जबान का? ब्लेड लग रहा है, इसे हम बोलते हैं द ब्लेड ऑफ द टंग, राइट? सो दिस इज कॉल्ड द ब्लेड ऑफ द टंग. एंड देन आफ्टर द ब्लेड ऑफ द टंग, दिस पार्ट दैट यू सी, दिस इज द फ्रंट ऑफ द टंग. इस हिस्से को हम कहते हैं द फ्रंट. ये फ्रंट कहलाता है. This is the front. Look at this. Let me put it like this. This is the tip. This part is the tip. And this little part is called the blade. This is the blade of the tongue. And then this behind the blade is called, this part is called the front of the tongue. This is the front. All right? This is the front. And then this is the back. See? This, all of this is the back. और ये आपको नजर भी आया पिछला हिस्सा जबान का, तो हम इसको बोलते हैं the back of the tongue. This is the back of the tongue. This is the front of the tongue. And this little part here, right beneath, right after the tip, this part is called the blade. इस हिस्से को हम बोलते हैं blade. ठीक है? और ये हमारी tip. This part is called the front of the tongue. इसको आप लिख भी सकते हैं अगर आप चाहें तो, the front of the tongue. And this is the back of the tongue. ठीक है? Tip, and then blade, then front, and then the back. And this is called the rim. All of this, the sides that you see, the edge of the tongue, this is also called the rim. ये जो आपको नजर आ रहा है, जो बाउंड्री बनी हुई है, इसको एज बोल रहे हैं. जो किनारा है आपकी जबान का पूरा, ये पूरा का पूरा जो किनारे आपको नजर आ रहा है, इसको हम कहते हैं the rim. Rim. All right? The rim. जैसे वो टायर का रिम नहीं होता है, इसी तरह रिम इसको बोलते हैं, रिम. ठीक है? अब कौन सी चीज किस कौन से तरीके से कौन सी आवाज निकलती है, इंशाल्लाह मैं आपको बाद में बताऊंगा. बट राइट नाउ अगेन, ओके, this is the tip. One more time. This is the tip, and then this part is called the blade, right? And then after the blade, we have the front of the tongue. This is the front of the tongue. Look at this. This is the front of the tongue. And then after that, उसके बाद हमारे पास क्या है? This is the back of the tongue, right? This is the back of the tongue. I hope this is clear. Now you need to remember these terms. आपने इसको लिख भी सकते हैं, अपनी जबान देखिएगा अभी जब क्लास खत्म हो जाए. Open your mouth और फिर अपनी जबान पे उंगली से रख के देखिएगा, बोलिएगा ये टिप है, ये ब्लेड है, ये फ्रंट ऑफ द टंग है, ये बैक ऑफ द टंग है. इस तरीके से बोलिएगा आईने में देख के. ठीक है? Look at your tongue and then say. और ये जो है किनारे पूरे, ये जो पूरा किनारा है, जो बाउंड्री बनी हुई है आपकी जबान की, ये पूरा किनारा जिसको हम एज, इसको हम बोलते हैं रिम. रिम, राइट? चलें, ये जबान आपकी एक आर्टिकुलेटर है, लेकिन इसके कुछ हिस्से हैं जैसे मैंने आपको बताया था. टिप, ब्लेड, फ्रंट, बैक एंड द रिम. दिस इज कॉल्ड द रिम. ये आउटलाइन समझ लें इसकी पूरी, आपकी रिम है. अब चलते हैं जरा जनाब अंदर, आर्टिकुलेटर्स देखते हैं, मुंह के अंदर चलते हैं थोड़ा सा. ये देख रहे हैं आप, ये हिस्सा आपको नजर आ रहा है बम्पी सा, ये जो बम्पी सा एरिया right after your front teeth. This area is called the ridge. We call it the ridge. जबान लगाएं अब अपनी, आप सब मुंह में जबान लगाएं अंदर इस हिस्से पे, बिल्कुल दांत अपने जो आपके सामने के दांत हैं उनके पीछे जो हिस्सा है, आप इसको महसूस करें जबान से. जबान लगा के टिप ऑफ द टंग लगाएं, महसूस करें. बम्पी सा होता है, थोड़ा सा उभार सा होता है आपके मुंह के अंदर, ये ऊपर. इट्स कॉल्ड द रिज. इसको हम इसी वजह, उभार की वजह से हम इसको बोलते हैं रिज. दिस इज द रिज. ऑलराइट? इस हिस्से को क्या कहते हैं? रिज. ये देख लीजिए, ये जो हिस्सा है, यू कॉल इट द रिज. ये जो उठा हुआ सा होता है थोड़ा सा, ठीक है, इसमें लाइनें सी बनी हुई है इसको हम बोलते हैं द रिज. उसके बाद, रिज के बाद क्या हिस्सा शुरू होता है? हार्ड पैलेट. नाउ मूव योर टंग डाउन अ लिटिल बिट. महसूस करें, अपनी जबान को पीछे लेके जाएं, स्लाइड करें थोड़ा सा पीछे, और देखें ये जो जितना सख्त हिस्सा है, जिसको आप ऊपर का तालू बोलते हैं, सख्त हिस्सा, सख्त हड्डी है ना, ये इट्स हार्ड. वी कॉल इट द हार्ड पैलेट. इसका नाम क्या है? हार्ड पैलेट. हार्ड पैलेट, ये जो सख्त हिस्सा है. रिज है, रिज. रिज के बाद क्या है? द हार्ड पैलेट. हार्ड पैलेट. ठीक है? उसके बाद देखें, ये जैसे और नरम होता जाता है. जबान पीछे करें, अपनी जबान पीछे करें अपने मुंह के अंदर, आप महसूस करें. पहले तो रिज है, रिज के बाद जो है हार्ड पैलेट है, और जैसे जैसे जबान को पीछे लेके जाएंगे, you're gonna feel soft. It's gonna get softer. पीछे लेके जाएंगे जबान को जैसे जैसे,
तो वो जो सख्त हड्डी है वो नरम नरम उसमें तब्दील होना शुरू हो जाएगी। इसको हम बोलते हैं सॉफ्ट पैलेट। ये देखें, ये नरम, जैसे ये कौवे की तरफ यूव्यूला बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं यूव्यूला। लुक एट दिस, जो कौवा जिसको उर्दू में बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड यूव्यूला, यूव्यूला। और ये जो आपको नरम नरम नजर आ रहा है, ये जो नरम होता है हिस्सा, इसको हम बोलते हैं सॉफ्ट पैलेट। फिर थोड़ा सा ऊपर जाते हैं तो फिर वो हार्ड होना शुरू हो जाता है, ये देखिए, ठीक है। दिस इज कॉल्ड द हार्ड पैलेट, हार्ड पैलेट। और फिर नरम, हार्ड का मतलब है सख्त, जितना हिस्सा मुंह के अंदर ऊपर का आपका जो जबड़ा है, जो ऊपर का, इसको आप तालू बोलते हैं, ये सख्त है, इसको बोलते हैं द हार्ड पैलेट। और उसके बाद पीछे जैसे जैसे जाते थे, जबान को पीछे आप महसूस करें लगा के, you're gonna feel it, it's gonna get softer, and that is called the soft palate. That is also an articulator. ये हम क्यों सीख रहे हैं? क्योंकि हम जबान को यहाँ पे लगाते हैं, कुछ आवाजों के लिए हम रिज पे लगाते हैं। देखिए रिज मैं आपको दिखाता हूँ फिर से, ये देखिए, कुछ आवाजों के लिए हम जबान को यहाँ पे रिज पे लगाते हैं, ठीक है। ओके, नाउ लुक एट दिस। सो कुछ जबान, कुछ जो आवाजें हैं उनके लिए आप जबान को कहाँ लगाते हैं? रिज पर, यहाँ पर, जैसे कि बोले सब, बोले, सबने करना है इसको। तो ये जबान कहाँ पे लग रही है आपकी? ये जबान, आपकी जबान की जो टिप है, आप ऊपर रिज पे लगा रहे हैं, इस हिस्से पे, ये देखें, ये हिस्सा, ये हिस्सा है ना, इसको बोलते हैं रिज। आप जबान की जो टिप है यहाँ पे लगाते हैं तो आप बोलते हैं ठ, 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 ठीक है। तो ये हो गया हमारा रिज, ये भी आर्टिकुलेटर है। इसके बाद है ये हार्ड पैलेट है हमारे पास, देखें ये, दिस इज द हार्ड पैलेट, लुक एट दिस, हार्ड पैलेट, राइट। एंड देन वी हैव द सॉफ्ट पैलेट, ये सॉफ्ट पैलेट कहलाता है क्योंकि ये सॉफ्ट होता है। जैसे कि आप बोलते हैं ग, बोलें ग, 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 जबान को महसूस करें, जबान का पिछला हिस्सा आप सॉफ्ट पैलेट पे लगाते हैं तो बोलते हैं ग। ये देखें सॉफ्ट पैलेट है, ग, ग, बोले सब ग, ग, ग। यू कैन फील इट, आप महसूस कर सकते हैं ना ग कैसे अदा हो रहा है। आपने जबान का पिछला हिस्सा जिसको हम बोलते हैं द बैक ऑफ द टंग, ये हिस्सा द बैक, लुक एट दिस, द बैक ऑफ द टंग is coming in contact with the soft palate, and that's how you produce the sound g, 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 right? All right, so one more time, let's review everything. ये हमारे articulators हैं, ठीक है। इनसे हम मुख्तलिफ consonant sounds create करते हैं। आज हम यही देख रहे हैं, हमने vocal cords के बारे में नहीं पढ़ा फिलहाल, क्योंकि वो vowel sounds के लिए use होते हैं। Right now, just remember all of these are your articulators, right? Lips, articulator number one, lips. Then your teeth, your teeth, your tongue is one of the biggest articulators. Now the tongue has different parts. Let me show you the different parts of the tongue. Look at this. This is the tip of the tongue. And right after the tip of the tongue, this is called the blade. And then you have the front. This is the front. Look at this. This is the front. And then this is the back of the tongue. This is called the back of the tongue. All right. And then you have the ridge. Look at this. All right. This is the ridge. See? Look at this. This is the ridge. This bumpy part inside your mouth, the upper jaw, this is called the ridge. इसको हम बोलते हैं ridge. अब जब भी मैं आपसे कहूँ भाई जबान को आपने रिज पे लगाना है, तो आपको पता चल जाएगा आपने जबान को कहाँ लगाना है। इस तरह आपकी जो प्रोनाउंसिएशन होगी वो सही होगी, आपको पता होगा, यू नो हाउ टू प्रोड्यूस दैट साउंड। मैं आपको बताऊंगा भाई ये आवाज देखें इस तरह अदा होगी, तो मैं आपको बताऊंगा कौन सा आर्टिकुलेटर कहाँ पे लगेगा, किस तरीके से हम उसको आर्टिकुलेट करेंगे, किस तरीके से हम उसको अदा करेंगे। जबान का कौन सा हिस्सा, टिप या ब्लेड या फ्रंट ऑफ द टंग या बैक ऑफ द टंग, हम कहाँ पे लगाएंगे तो ये आवाज अदा होगी। तो आवाज, सही आवाज अदायगी के लिए हमें ये आर्टिकुलेटर्स जानना जरूरी है। तो ये देख लीजिए, दिस इज कॉल्ड द रिज। इसको देख लीजिए फिर से, वी कॉल इट द रिज। उसके बाद रिज के बाद जो सख्त हिस्सा है, इसको हम कहते हैं द हार्ड पैलेट। ये पूरा का पूरा जहां तक सख्त हड्डी है, इसको हम बोलते हैं द हार्ड पैलेट।
एंड जैसे जैसे वो सॉफ्ट होना शुरू करता है हम उसको बोलते हैं द सॉफ्ट पैलेट. दिस इज कॉल्ड द सॉफ्ट पैलेट. लुक एट दिस. सी दिस इज द सॉफ्ट पैलेट एंड दिस thing is called the uvula. All right. So that's it. If you have any questions right now, you may unmute your microphones and ask me any questions if you have any questions. Yeah. Amir, Hamza, Ahmad, Seher, Talha, Shazia, Nazia, Seher, anybody. Any questions at this stage? आज मैंने सिर्फ ये बताया है, मैंने आज प्रोनाउंसिएशन नहीं सिखाई है, सिर्फ बताया है कि हम अदायगी कैसे करेंगे और जो हम ऑर्गन्स यूज करते हैं उनको हम क्या कहते हैं. तो यहाँ पे किसी के पास कोई सवाल है तो माइक्रोफोन अनम्यूट कर सकते हैं आप लोग अपने. यस प्लीज, बगैर किसी परेशानी झिझक के पूछ लीजिए, क्योंकि अगर अभी नहीं पूछेंगे तो फिर कब पूछेंगे. क्या ख्याल है जी? नोबडी हैज एनी क्वेश्चंस? अहमद या तला? यस तला. सर एक बार सबसे मतलब पूछ लें बारी बारी कि क्या है तो मतलब याद भी हो जाएगा. ये तो मैं कल पूछूंगा क्योंकि इट्स 10 o'clock राइट नाउ. इट्स 10 o'clock राइट. मुझे से ये बताइए कि आपने लिख लिया आपने कि कौन सा जो है वो आर्टिकुलेटर क्या है. आर्टिकुलेटर क्या होते हैं ये पता चला. कौन कौन से होते हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हैं, क्या ये क्लियर है तला? ये बताइए मुझको. ये तो कल मैं सबसे सबसे पहले क्लास के अंदर सबसे पहले मैंने सवाल ही यही करना है कि इसको हम क्या बोलते हैं और उसको क्या बोलते हैं, और एक क्विज भी दूंगा कल इंशाल्लाह. जी सही इंशाल्लाह. फिर अपर साइड का मुझे थोड़ा सा मसला हो रहा है. ये देखें, ये अपर साइड का या अपर साइड देखें, ये आपको महसूस, ये तो आपको पता है ना इसको. ये जो हिस्सा है आपकी जबान से आपने महसूस किया, खुद से जबान लगाएं. दांतों के पीछे जो हिस्सा है, दांतों के बाद यानी ऊपर के जो दांत हैं उनके बाद जो हिस्सा शुरू होता है मुंह का, उठा हुआ सा होता है, उभार सा होता है. यस ये जो जबान से महसूस यस करें इसको हम बोलते हैं रिज. क्या बोलते हैं? रिज. रिज. ठीक है, रिज. उसके बाद जो है जबान को और पीछे लेके जाइए तो आपको सख्त हिस्सा महसूस होगा. ये सख्त हड्डी है, इसको बोलते हैं हार्ड पैलेट. ऊपर के हिस्से की बात कर रहा हूँ. हार्ड पैलेट, ये हिस्सा देखिए, ये हिस्सा क्या कहलाता है? हार्ड पैलेट. और जैसे जैसे आप जबान को पीछे लेके जाते रहेंगे तो फिर नरम हिस्से में तब्दील हो जाता है या नहीं हो जाता? जहाँ पे कौवा होता है, फिर इख्तिताम उसका कौवे पे होता है. देखें ये यूव्यूला जिसे हम बोलते हैं. ये देखें, यस ये देखें, ये हिस्सा, ये सब नरम हिस्सा है. इसको हम बोलते हैं सॉफ्ट पैलेट. ये सॉफ्ट पैलेट कहलाता है. जैसे कि आप बोलें ग, ग बोलें ग. तला बोलिए ग, ग ग. ग कहाँ? अब आप ग बताएं, आप जबान कहाँ पे लग रही है? सख्त हिस्से पे लग रही है, नरम हिस्से पे लग रही है, और जबान का पिछला हिस्सा लग रहा है? जबान का पिछला. अच्छा बताएं, नरम. आप आप टिप टिप जो है जबान की टिप लगा रहे हैं या बैक ऑफ द टंग लगा रहे हैं? क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? जबान का बैक कौन सा ऑफ. हिस्सा? बैक ऑफ द टंग, है ना? तो आप बैक ऑफ द टंग को किस पे लगा रहे हैं? सॉफ्ट पैलेट पे. और बोल रहे हैं ग, ग, ग. अच्छा बोले, अब बोले ठ, 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 बोले ठ. ये अब बताएं आप क्या इस्तेमाल कर, जबान का कौन सा हिस्सा इस्तेमाल कर रहे हैं? टिप, ब्लेड, फ्रंट या बैक? क्या इस्तेमाल हो रहा है? टिप टिप ऑफ ऑफ द द टंग. टंग. अच्छा बताएं, अब मुझे बताएं टिप कहाँ लगा रहे हैं आप? टिप हार्ड पैलेट पे लगा रहे हैं, रिज सॉफ्ट पैलेट पे लगा रहे हैं, या रिच पे लगा रहे हैं? रिज पे. रिच पे लगा रहे हैं. बस यही चीज सीखने की है, बस ये जहन में रखना है. कोई इतना इतना बड़ा यानी मुंह के अंदर बस थोड़ी सी चीजें हैं ना जिसका हम इस्तेमाल करते हैं आवाजें निकालने के लिए. बस यही है, आपने जहन में रखना है. भाई लिप्स हो गए, टीथ हो गए, टंग तो आपको पता चल गई, पूरी की पूरी जबानी हम इस्तेमाल करते हैं. और ये तीन हिस्से हैं आपके ऊपर के यानी के जबड़े में, जिसको हम तालू बोलते हैं. आपके रिज है जो बम्पी हिस्सा सा है, थोड़ा सा उभार सा है, उसके बाद हार्ड पैलेट है, उसके बाद सॉफ्ट पैलेट है. बस खत्म बात. ऊपर आपके दांतों के यानी आपके पास जो ऊपर के हिस्से में तीन तीन जो है वो आर्टिकुलेटर्स हैं जो फिक्स्ड हैं दांतों के अलावा. रिज है, हार्ड पैलेट है, फिर सॉफ्ट पैलेट है. और ये तीनों ही इस्तेमाल होते हैं. जैसे मैंने अभी आपको मिसाल दी, आपने खुद बोला तो आपने कहा कि सर मैं टिप लगा रहा हूँ किधर? रिच पे. तो ये आवाज निकल रही है. ग आवाज निकालने के लिए मैंने बैक ऑफ द टंग को किस पे लगाया? देखें बैक ऑफ द टंग, ये देखें, ये बैक ऑफ द टंग है आपकी. ठीक है, इसको आपने यूव्यूल, ये जो ऊपर है सॉफ्ट हिस्सा, इस पे लगाया, सॉफ्ट पैलेट पे. तो आपने बोला ग, ग. इसी तरीके से जो है हम डिफरेंट साउंड सीखेंगे. 44 साउंड्स हमारे पास होते हैं. तो इंशाल्लाह इसको कल हम और डिस्कस कर लेंगे. अगर किसी और को कोई सवाल है तो मुझसे पूछ सकता है. सहर, अहमद,
शाजिया, नाजिया, अमीर, हमजा, एनीबॉडी हैज एनी क्वेश्चंस? सिर्फ ये टर्म्स याद होना जरूरी है। देखिए लिप्स आपको मालूम है, ठीक है ना, टीथ आपको मालूम है, टंग आपको मालूम है। टंग के कुछ हिस्से हैं, फ्रंट है, बैक है, ब्लेड है, टिप है और रिम है। बस ये आपने थोड़ा सा याद रखना है, इंशाल्लाह फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी जी। किसी कोई सवाल है तो कर लीजिए। यस प्लीज, एनीबॉडी, नोबडी हैज एनी क्वेश्चन? सब देख लें, देखें ये है मुंह मुंह के अंदर ये सब चीजें जो हम इस्तेमाल करते हैं मुख्तलिफ आवाज़ों के लिए, ठीक है। इसलिए आवाजें निकालने से पहले पता तो चले ना कि भाई आवाज निकलेगी कैसे, वो कौन सी चीज है, जबान क्या, कौन सा हिस्सा है, कहाँ पे लगेगा, किस तरीके से भाई कोई आवाज अदा होगी, तब जाके प्रोनाउंसिएशन सही होती है, तब जाके एक्सेंट इंप्रूव होता है, लहजा तब अच्छा होता है। अब अंग्रेज कहाँ पे जबान को लगाते हैं कोई आवाज अदा करने के लिए? जब हमें ये बात पता चल जाएगा तो हम भी जब ऐसे करेंगे तो हमारी आवाज भी ऐसी निकलेगी जैसे अंग्रेजों की निकलती है ना भाई? क्या ख्याल है, उनका मुंह अलग थोड़ी है कोई, उनके मुंह में भी वही चीजें हैं जो हमारे मुंह में तो लगता है किसी सब बोर हो गए, कोई माइक्रोफोन अनम्यूट नहीं कर रहा, अभी तला ने पूछा बस, और बाकी बाकी सब जो कह रहे हैं बस सर खत्म कर दें क्लास प्लीज, हो गया बहुत टाइम जी। nobody has any questions? Looks like nobody has any questions, so it means that that's enough for today. आज के लिए काफी हो गया मेरे ख्याल में।